Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 25 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, I have shown you two example program. हमने दो example program देखे थे. We have first seen the problem statement. We understand that problem statement, and then we start writing the code. The first program is about the publication company that publish two types of items, books and tape. So we have two drive classes. The one class is the publication, that is the base class, और उसके बाद हमने दो drive classes बनाई थी इसकी. The one drive class is the book and the tape is the other one, and we have some specialized information about these drive classes as a private data member of these classes. So book की जो specialized information थी, that is number of pages, and tape जो audio cassette है उसकी जो specialized information थी, जो data था, that is the duration of the tape. राइट और जो इसमें जेनेरिक जो चीज़ थी, जो दोनों बुक और टेप में चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, दैट इज़ द टाइटल एंड द प्राइस. ठीक है. सो दीज टू थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन बुक एंड टेप, we make these two things as a private data member or protected data member in the publication class. And to achieve the polymorphic behavior, we make the two functions. These are the get data and the put data functions virtual in the publication class. जो हमारे पास बेस क्लास थी उसमें हमने दोनों फंक्शन को virtual बना लिया था in order to achieve the polymorphic behavior, so that कि हमारे पास जो pointer है, pointer array of pointer whose type is publication, if it is pointing to a book object and if we invoke a get data function, तो वो ये चेक करे कि पॉइंटर की जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट है. जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी की क्लास से गेट डाटा फंक्शन इन्वोक करेगा. इफ़ यू वॉन्ट मेक गेट डाटा और पुट डाटा फंक्शन वर्चुअल इन द बेस क्लास, उस सूरत में इट विल लुक फॉर द टाइप ऑफ द पॉइंटर. सो पॉइंटर अगर बेस क्लास का है, इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द बेस क्लास गेट डाटा एंड पुट डाटा फंक्शन. एंड इफ दीज टू फंक्शंस आर virtual in the base class, whether we provide the definition of these functions or not, that is the other case, means that if they are pure virtual function or not. So अगर वो दोनों function virtual है base class में, उस case में it won't look to the type of the pointer, rather it will look at the type of the object pointed by that pointer. कि वो pointer जिस memory location को point कर रहा है उस memory location पे हमारे पास book type का object मौजूद है, book class का object मौजूद है, या फिर हमारे पास टेप क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद है. एंड इट विल कॉल गेट डाटा और पुट डाटा फंक्शन अकॉर्डिंगली. अगर टेप क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद है, इट विल कॉल get data या put data function of a tape class, and if we have a book class object, it will call get data and put data function of a book class. And then the second example is about the distance class, in which we overload a static operator. Static operator is used to multiply two distance object and then store the result in the third object, right? So if we have expression d3 is equal to d1 multiplied by d2, so it will multiply by d1 d2 and store the result in d3, right? First we overload simply that operator, and then we said that if we want to execute expression like d3 is equal to 7.5 multiplied by d1, the first value is the floating point value. Then for that case we have to make that function a friend function. ठीक है. उसके बाद फिर हमने उस फ्रेंड फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाया था. बट अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से हो d3 इज इक्वल टू d2 मल्टीप्लाई बाय 7.5, सो 7.5 बाद में आ रहा है, पहले d2 आ रहा है, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है. सो व्हाट इट डज, इट विल लुक फॉर अ single argument constructor in the distance class, and we write that constructor as well. It will convert 7.5 floating point value, that is in meters, into a distance object, meters and inches, and then it invoke operator static function. Okay, so then we have expression like d1 multiplied by the object, nameless object of a distance class. Okay. But if we want to execute a statement like d3 is equal to 7.5 multiplied by d2, so it will not invoke the first one argument constructor. So अगर हमारे पास ऑपरेंड के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑपरेंड के राइट साइड पे कोई बेसिक डेटा टाइप होगी, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होके उसको कन्वर्ट कर लेगा. जो बेसिक डेटा टाइप है उसको उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट. एंड इफ वी हैव अ बेसिक डेटा टाइप
at the left side of the operator and the user defined object or the object of a user defined class on the right side of the operand, then उस केस में it will give an error because it don't know कि जो floating point की class है उसमें हम changes नहीं कर सकते basically, ठीक है. So if 7.5 multiply by d2 इस तरह की आपके पास expression आती है, तो 7.5 is a floating point value. Now in floating point class we don't have a constructor that convert a floating point value into a distance object, right? So for that case we have to make the operator static function, that is the overloaded function for a static operator for distance class, a friend function. So इस function को हमें friend function बनाना पड़ेगा. When we make that function a friend function, then इसमें अब invoking object कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है. So then उस सूरत में it will convert the first parameter, whether it is a floating point value, into a distance object and then call that friend function, right? So अब अगर इसका friend जो version है, if we look at the friend version of a member function, then a friend version of member function require one more argument as compared to the member function. So operator static function हमने लिखा to overload a static operator, and if we want to make that function a friend function of a class, then in that case that function should take two parameters, right? Because इसमें अब invoking object कोई भी नहीं रहेगा. Now when we make a friend function version of this operator static function, जो overloaded static operator है इसका हमने friend version लिख लिया है. Now we can execute any of these statement. For example, d3 is equal to d1 multiplied by 7.5, or d3 is equal to 7.5 multiplied by d1, whether we have floating point value on the left side of the operator, static operator, or the floating point value on the right side of the operator, it will execute that function. But before executing that function, it will convert the floating point value, whether it is appearing on the left side or the right side of the static operator, into a distance object, ठीक है. But यहाँ पर एक चीज़ और एक जो कि observation है, if both of the values of the floating point value, for example 7.5 multiplied by 5.5, then in that case it won't execute this operator static function of the distance class, right? So उस सूरत में वो इसको simply float multiplication हो जाएगी, right? So if we make a friend function, friend version of a operator static function, then it will convert the floating point value if it is appearing on the right side or left side of the multiplication operator with the distance object, and then it will invoke that operator static friend function of a distance class, right? So this is what we have seen in the previous lecture. So in today's lecture we will start completely a new topic, that is introduction to generic programming. We will see what is a generic programming, and we achieve generic programming through templates in C++, and in C++ we have two kinds of templates. Our templates can be used with the functions or with the classes, right? So first let's see what is a generic programming. So there are some situations where same algorithm works for different data types. So we have same algorithm but it works for different data types. Suppose a function that returns the maximum of two numbers. So these two numbers can be integer, can be float, right? Can be long, can be double, right? So these are the basic types in C. So same algorithm to find the max number works for integer, for real numbers, for double, for long, even for character as well, ठीक है. So same algorithm काम करेगा उसके लिए. Character के case में it will look, it will check, it will compare the ASCII values of the character, right? So you can imagine now that a maximum of two number आपने ये find करना है, and the algorithm is same, even the type is different. Type floating point दो numbers हैं, उनके लिए भी same वही algorithm होगा. Integer दो number हैं, उनके लिए भी same वही algorithm होगा. और हमारे पास अगर double में values आ रही हैं, same algorithm is used for that. Even the same algorithm is used even if we are the two values are basically the characters,
अगर दो कैरेक्टर्स हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें से लार्जेस्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और करेक्टर केस में इट विल डेफिनेटली लुक फॉर द आस्की वैल्यू, और कंपेयर जो करेगा वो आस्की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा टू फाइंड विच कैरेक्टर इज़ द मैक्सिमम कैरेक्टर, राइट। सो अंटिल नाउ वी हैव टू राइट टू सेपरेट फंक्शन। सो हमने अगर मैक्स फंक्शन बनाना है फॉर इंटीजर, फॉर फ्लोट, फॉर लॉन्ग, फॉर डबल, फॉर कैरेक्टर। सो जो स्लाइड में एग्जांपल दी हुई है कि हमने फॉर एग्जांपल इंटीजर और रियल नंबर्स के लिए बनाना है, सो फॉर दैट वी हैव टू राइट टू सेपरेट फंक्शंस, राइट। तो दो सेपरेट उसके लिए फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल वी हैव वांट टू क्रिएट दीज द मैक्स फंक्शन फॉर integer, float, double, long, character, all these basic types in C++. Then we have to write 5 different definition of the same function, जिसमें just type different हो रही है, बाकी function की जो body है, जो function की definition है, that is the algorithm, that is same in all the cases. Only just the difference is that the type of the number, they are the different, right? So for that we just have to write 5 different functions, that is int max, int, float max, float, for example character max, character, long max, long, double max, double, right? So that is the type कि हमें पहले पैरामीटर की टाइप फ्लोट है, दूसरे की फ्लोट है, रिटर्न टाइप भी फ्लोट है। सो दैट इज़ द वन फंक्शन, सो दैट इज़ द सेपरेट फंक्शन। सो ये काइंड ऑफ ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं आप। मैक्स फंक्शन को 5 टाइम्स आपने ओवरलोड कर लिया फॉर इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, राइट। सो 5 टाइम्स इसको ओवरलोड कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी नो अंटिल नाउ। सो थ्रू जेनेरिक प्रोग्रामिंग, what generic programming provides us, we can have just one definition of the max function, and that should work for any of the given type. So int के लिए भी वो कर सकती है, float के लिए भी कर सकती है, double के लिए भी वो काम करेगा, long के लिए भी और character के लिए भी. So that can be done using generic programming. That is, we have a single definition instead of 5 definitions, and that definition works with any of these 5 types. So generic programming is a style of computer programming in which algorithms are written in terms of to be specified later types. कौन सी type to be specified later? Types को हम बाद में define करेंगे, किस time पे we will see. So to be specified later types that are then instantiated when needed for specific type provided as parameter. So to be specified later कि जब आप इसको मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैक्स को यूज़ कर रहा हूँ इंट के लिए, then that function is instantiated for an integer type, so when needed for a specific type provided as a parameter. अगर मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इंटीजर के साथ, तो उस फंक्शन का एक इनिशिएट हो जाएगा, इंस्टेंशिएट हो जाएगा एक इंटीजर के साथ वर्जन। अगर if I am calling that function with the floating point value, if I am passing 5.5, 6.5, then the version of the max function is instantiated with the floating point value, and so on. So if the max function is called with int parameter, max function with int parameter is created or invoked. So in C++, generic programming is implemented by using templates. ठीक है, सो जेनेरिक प्रोग्रामिंग का हमें कॉन्सेप्ट आ गया, व्हाट इज जेनेरिक प्रोग्रामिंग, और C++ में हम इसे टेम्पलेट्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं, राइट। सो बेनिफिट ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग, देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ द generic programming, but one of the major benefit of that is the reusability. We can reuse the same piece of code for multiple types. So this is a function to find the maximum value. The function name is max. Value 1 is the parameter 1, value 2 is the parameter 2, return type is some value, right? So if value 1 is greater than value 2, return value 1, else return value 2. ठीक है, so ये simply max function है, and that is the algorithm to find the maximum of the two number. जो इस function max function की definition में जो चीज़ हमारे पास statements आ रही हैं, that is called the algorithm to find the maximum of two number. Now reusability is you have the same thing and you reuse that thing for multiple times, right? So if I call that function
with the integer value. So 15 and 67 is the integer value. 15 parameter 1 is an integer value, 67 is an integer value, and I am calling max function with these two integer values, although I won't have provided type over here. Now what it does, it will create or instantiate another version of this function with integer argument. So first argument is the integer, second argument is also of integer type, and then it will compare these two and return. Okay? So argument 1 या argument 2 वो return कर देगा. So if argument 1 is greater than argument 2, so जहाँ पर 15 या 67 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, यहाँ पर argument 1 और argument 2 हो जाएगा. So int type एक create कर दी. So अब जब भी int type के साथ कॉल करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्रिएट कर दी. So इसी तरह से नेक्स्ट टाइम हमने इस फंक्शन को कॉल किया मैक्स को 15.45 and 67.45. So two floating point values. Now it will create a float version of that function. So first argument की type float है, second argument की type float है, and here we have argument 1, not the fixed value. So let me write over here. So this is not 15. So this should be argument 1 and this is argument 2 over here. ठीक है? So इसको आप इस तरह से लिख लें. So this should be argument 1, this should be argument 2. So यहाँ पर fixed value नहीं आएंगी. So float पैरामीटर का एक वर्जन क्रिएट हो गया इस फंक्शन का, int पैरामीटर का एक वर्जन क्रिएट हो गया. अब जब भी int पैरामीटर पास होंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, सो दोबारा से वो फंक्शन इंस्टेंशिएट नहीं होगा, वो उसी को जो पहले उसने इंस्टेंशिएट किया था फॉर द इंटीजर पैरामीटर उसी को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा. सो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, इस जगह पे वैल्यू 15 नहीं है, इस जगह पे आपने आर्गूमेंट 1 लिखना है. आर्गूमेंट 1 इज ग्रेटर देन, सिमिलरली नॉट 67 आर्गूमेंट 2. इसी तरह से if argument 1 is greater than argument 2, right? I hope you can correct this typo mistake. Now that is the reusability principle. We have just one single copy, and using that single copy we can instantiate multiple copies during the execution of the program depending on the parameter that we are passing to that function. So the other thing that can be achieved using generic programming is that if you want to make changes in the algorithm, so अगर आपने algorithm के अंदर change करनी है, so you just have to change at one place. एक single place पे आप change करेंगे. अगर आपके पास इस तरह से generic programming की facility नहीं है C++ में, you have to create 5 different copies of that function with int, float, double, long and character type. And if you want to change the algorithm, you have to change in 5 different places, right? So यहाँ पर आपको जस्ट ये जो जेनेरिक वर्जन है इस एल्गोरिथम का या इस फंक्शन का जेनेरिक वर्जन, इसको आपने चेंज करना होगा और रन टाइम पे ये ऑटोमेटिकली इंट या फ्लोट के लिए खुद ही चेंज हो जाएगा. ठीक है? सो दैट इज़ द मेजर बेनिफिट रीयूजेबिलिटी फॉर यूजिंग जेनेरिक प्रोग्रामिंग. नाउ let's start the introduction of templates, and we already know that templates can be used in C++ to do generic programming, to write generic function, that is you write just the algorithm without knowing the type. Okay? So templates make it possible to use one function or class to handle many different data types. Even you can write a template class, right? So template concept can be used in 2 different ways, and these are with function and with classes. So ये 2 तरीके templates को use करने के लिए. First we will see a template function, how we write a template function, how we can call that function, and what are the benefits, and then we will see a template class. So a simple function template. Suppose we want to write a function that returns the absolute value of 2 numbers or absolute value of a single number. In fact, तो हम उसको एक नंबर पास करेंगे, एक सिंगल नंबर, और वो हमें रिटर्न करेगा एक उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स वैल्यू विदाउट रिगार्ड ऑफ इट्स साइन. सो इफ आई पास अ नंबर 3 टू दैट फंक्शन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3 एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज आल्सो 3. सो वो माइनस साइन या प्लस साइन को ख़त्म कर देता है, सो माइनस साइन को ख़त्म कर देता है इनफैक्ट. So absolute value of 4.5 is 4, and absolute value of -4.5 is also 4. So that is the absolute value, and now so you can see that absolute value can work with the integers and with the floating point values as well. ठीक है?
So दोनों के लिए वो काम कर सकता है. So this is absolute value of a number, absolute value of a number. ठीक है, इसको आ कर लें यहाँ पर a number, right? So एक सिंगल नंबर हम पास कर रहे हैं, उसके हमें एब्सोल्यूट वो रिटर्न करके देख रहे हैं. यू कैन सी दिस थिंग फ्रॉम हियर, राइट? तो यहाँ से देख सकते हैं इसे. वाई टेम्पलेट. So let's see example. So if we don't know template, we have to write an integer version of that function. ठीक है, so हम एक integer value पास करें से n, इसको check करें if it is less than 0. If it is, that means it is a negative value multiplied with -1 so that it become positive value and then return that value, right? And if it is greater than 0, you can simply return that n. So that is an integer version of a absolute function ABS. And that is a long version of that function. ठीक है, अब long type के साथ है. So body of the algorithm is same. ठीक है, body same है, just type different हो रही है. So we can use a template over here. So float के लिए भी different आपने definition लिख ली. So you write 3 definitions, right? And so that absolute function can work with float, long, int, right? Or we can write can have another definition for double as well. ठीक है. So what are the observations? Observations are same algorithm, that is the body of the function is same in each case. So body of function जो है वो हर केस में यहाँ पर same है. So that means the algorithm is same, but they are completely different functions because they handle different types of argument and return values. ठीक है, so ये overload हुए में function ABS function. So compiler can easily differentiate among these functions during the call time. For example, if you call that function with 3.5, it knows that this is the float version of that function. If you call the function with value 4, it knows that this is the integer version. And if you call that value with a long integer number, that means that this is the long version of that function. So compiler knows that these are the 3 different functions, right? And what makes them different, it is the type that makes them different. Rest the algorithm is the same. So it is time consuming and it wastes space as well. ठीक है, so आपके फाइल जो सोर्स फाइल है उसके साइज को बड़ा कर देगा, and it is time consuming to write that function 5 times or even more. So if you just have a different data type for each of the data type, right? So that it takes some time and waste space in terms of the source code file. ठीक है. So using template, you need to write such a function just once, and it works for many different data types. So this is a big picture that shows you that we have a func function, and that is a template function. One function templates in listing source file. So एक function है हमारे पास template का, and when we call that function with the integer value, an integer version of that function is created. ठीक है, and when we call that function with the floating point value, so for a character for example, then a character version of that function is created. And when we call the same function using a floating point value, then a float version is created for that function. And that is the beauty of template, right? It resides at the execution of the program. इसको किस type की value pass की जा रही है, उसी type का it will instantiate a function using a template function from a template function. ठीक है, और template function से एक नया function instantiate करेगा by watching the type of the argument during the call time. So call time पे इसको integer argument pass हुए थे, it will create an integer version. So call time पे integer argument pass हुए थे, it will create an integer version of that function. Call time पे argument character type के pass हुए थे, character version of that function is instantiated. And call time पे argument float type के pass हुए थे, float version of that function is instantiated during the execution of the program. Right, so template version of ABS function. Now let's see the template version of ABS function and discuss in detail the different values, different type of parameters in that version. So हमारे पास that is the function template, that is called a function template, and this is the function template for an absolute function, right? So here the most important thing is the type of the argument is T, right? So key feature is that it
it represents the data type used by the function. So t type का data use करेगा, and t is also the template argument and the type that is decided at the execution of the program or during the runtime. So template is a keyword. It tells the compiler that this is the template function, and the keyword class just can be called the type, right? So as जैसे हम कहते हैं कि user ने अपनी class create कर ली, that means a new type is created, that is a user defined type. So class represents basically a type, or they both are the same thing. So किस type का t is a type now, right? And जो पैरामीटर ABS फंक्शन के पैरामीटर को जो टाइप पास होगी वो t होगी, और जो रिटर्न टाइप होगी that is also t. ठीक है? And what is t? That is decided when we invoke this ABS function. So when we invoke this ABS function with int, so t जहाँ पर इस फंक्शन में आ रहा है, इस फंक्शन की डेफिनेशन में, that will be replaced by the int. So वो template function से it will instantiate a new version of a function, and where it finds t it replaces it with int value. ठीक है? So इस function को लेगा और इसको int value से replace कर देगा जहाँ पर t आ रहा है, and then it execute that function, right? So that is the template version of that function. So what the compiler does at compile time, the compiler do nothing, it just ignore the template function. It cannot generate the source code as it don't know the type. So source code template function का generate नहीं किया जाता because it won't know the type of that function. So it remember the template function for the future reference. कि कब उस function को call किया जाएगा और तब वो उसे instantiate करेगा एक नया function. So it just remember that function for the future reference. So code generation of the template function take place when the function is invoked. जब भी वो फंक्शन इन्वोक होगा उस टाइम पर उसकी कोड जनरेशन होगी. So when we invoke the ABS function with a double type, then the double version of the ABS function is instantiated from the function template of ABS. So ABS function का जो function template है उससे double type का जो ABS function है जिसमें पैरामीटर की टाइप डबल है और रिटर्न टाइप भी डबल होगी, वो फंक्शन इंस्टेंशिएट किया जाएगा और उसको मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ स्टेटमेंट लाइक int x is equal to -3 y, so both are integer parameter, right? And when we call this function like this abs x, then it determine the type of x is int, so it create or it instantiate int version of the ABS function, and then execute that function by passing it the value of x, and whatever is returned is stored in y. ठीक है? So now the compiler knows that type is int, so it generates a specific version of the ABS function for int type. So अगर यही function instantiate होगा, अगर x की type float होती तो ये ABS function का जिसमें एक और वर्जन इंस्टेंशिएट हो जाता जिसमें पैरामीटर की टाइप फ्लोट होती और रिटर्न टाइप भी फ्लोट होती. एग्जांपल प्रोग्राम विद ABS template function. So we have a template class t. So t abs t n. So n is the name of the parameter. The type of a parameter is t, and the return type of ABS function is also t. So जो भी पैरामीटर की टाइप होगी, फंक्शन कॉल करेंगे, जो भी पैरामीटर की टाइप होगी उसी टाइप का पैरामीटर ये फंक्शन रिटर्न भी करेगा. Now in the return statement we have a conditional operator, and we are checking if n is less than 0. If it is, it multiply n with -1. So that अगर वैल्यू n की माइनस में है it will become a positive value, and if it is greater than 0 then it returns n as it is. Greater than or equal to 0, it returns n as it is, because then the value of n is positive actually. Now in the main function we have two integer variable, int1 value is 5, int2 value is -6. So long हमने डिक्लेयर किए दो वेरिएबल लॉन्ग के, lon1 70,000 and lon2 -80,000, and then we create a double type variable dub1 9.95 and dub2 -10.15, right? And now we start calling the function abs. So we call a function abs in cout statement. So ABS function कॉल हुआ है. Now it checks the type of int1 parameter. int1 parameter किस टाइप का है? Integer टाइप का है. So it will create, the compiler will create
or instantiate ABS version of the function with int type parameter from the ABS function template. So ये generate हो जाएगा memory में, it will occupy some memory and then it calculates the absolute value of n. हम इसको pass करें 5 की absolute value calculate करेगा, it will return then 5 that will be displayed by the cout statement in the as the output to the program. Okay. And then the next statement is we are passing again an integer value. ठीक है, दोबारा आप integer value pass करें and now it won't create a new version or won't instantiate a new version of a ABS function from the ABS temp file for the integer. Why? Because it already created an integer version of a ABS function from ABS template. So it used that version. ठीक है, वो उसी को दोबारा यूज़ करेगा. That is the beauty of the compiler कि वो हर दफ़ा नया वर्जन क्रिएट नहीं कर रहा. ठीक है, आपने एक दफ़ा इंट के साथ कॉल किया, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता था कि एक दफ़ा इंट पैरामीटर के साथ कॉल किया, it instantiate ABS function with int parameter from the function template, then you again in the program call that function with the integer parameter. So it might instantiate a version of another version of ABS function with again the integer parameter, right? So the integer के दो integer type parameter के दो version create हो जाते हैं ABS function के, but it is not done by the C++ compiler. The same mechanism it not follows. The mechanism it follows, if it create an integer version of that template function, then आपके program में throughout the program जब तक program execute कर रहा है कोई भी और इंटीजर पैरामीटर सेम फंक्शन को पास किया जाता है तो उस सूरत में वो वही कॉपी यूज़ करेगा. ठीक है, इट रिटेन्स दैट कॉपी इन द मेमोरी. सो इसको पता है कि ABS फंक्शन की इंटीजर वर्जन के साथ, इंटीजर आर्गुमेंट के साथ, टाइप के साथ मैंने कॉपी क्रिएट कर दी है. इट कीप दैट कॉपी अंटिल द प्रोग्राम एग्जिट. जो कॉपी इसने कीप की हुई है तो जब भी आपने ABS का फंक्शन दोबारा कॉल किया विद द इंटीजर पैरामीटर इट एग्जीक्यूट दैट फंक्शन अगेन. ठीक है, एंड देन पैरामीटर वैल्यू अब हमने यहाँ पे -6 पास किया था. -6 यहाँ पर आएगा less than 0, -6 multiplied by -1 that is 6. It return that value, so 6 will be printed as output. ठीक है, and then it call the ABS function with the LON1 parameter, that is long type parameter के साथ वो function call कर रहा है. जब long type parameter के साथ ये function call करेगा, now memory में जो ABS का version instantiate हुआ था from the ABS template function is the int version. Now it will create a long version, that is the type of the parameter is long and the return value of that function is also long. Now it will pass the value of LON1 parameter, that is 70,000. इस variable की value 70,000 pass हो जाएगी इस function को. So 70,000 is less than 0, condition is false, so it returns 70,000. So colon is missing over here. Maybe I can put the colon, right, and then it prints 70,000 on the screen. Next cout is again we are calling the long one, long2. Okay, so again we are calling ABS function with a long2 by passing the value of long2 parameter. Now type of the parameter is long and it already instantiated a long version of the ABS function using ABS function template, so it uses that copy. So ये long2 की value, that is -80,000, will pass to that function. The value is less than n, so it returns -1 multiplied by -80,000. So 80,000 will be returned in that case and that will be printed on the screen, right? So दो version इसके instantiate हो चुके हैं ABS function के. Now anywhere in the program if you pass the integer value anywhere in the program it uses that function definition. ठीक है, वो इसी function definition को use करेगा. वो अब दोबारा integer के लिए नए function को instantiate नहीं करेगा, इसके नए version को instantiate नहीं करेगा. Then we call the ABS function with double, dub1, dub1 variable whose type is double. So ABS function के जो वर्जन क्रिएट होते हैं int और long के साथ, डबल के साथ अभी कोई वर्जन क्रिएट नहीं हुआ था. So the compiler will create a version of that function using with the double parameter. So double version of that function is created. The type of parameter is double. So dub1 की जो value है 9.95 that will pass to this function. This condition is true. Sorry, this is false. 9.95 is less than 0. That is false. So it returns n.
that is 9.95. So 9.95 will be printed on the screen. The last function call to the ABS is we are passing the tab2 value. The value is minus 10.5. So again it passed this value to this function. यहाँ पे minus 10.5 आ जाएगा. This condition is true. The condition true हो जाएगी तो it will execute this statement. So minus 1 multiplied by minus 10.15, it will return 10.15. That will be printed on the screen, right? So जो भी पैरामीटर्स को रन टाइम पे पास करेंगे उसी के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसी की वैल्यू रिटर्न कर देगा, राइट? Let's go to the program and execute it and check the output. So this is the function template. ABS is the name of the function, T is the type, and this T and this T. So अगर पैरामीटर की टाइप int होगी तो int ही रिटर्न टाइप होगी इस फंक्शन की. Parameter type is float, then return type of this function is float. If parameter type is unsigned int, the return type is also unsigned int, right? For example, so हमने एक दफ़ा integer के साथ कॉल किया, दूसरी दफ़ा किया, right? And then we display this message, ठीक है? So ये function call जहाँ पर हो रहा है int1, int2 and so on. Compile it and execute it. Let me change the font. Right, now you can see absolute value of 5 is 5, absolute value of minus 6 is 6, absolute value is minus 80,000 is 80, and absolute value is minus 10.5 is 10.5. So अगर हम इसको आगे पीछे भी कॉल कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ और जहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया मैंने सिर्फ एंड में इंट को. देन इफ़ आई कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दैट फंक्शन, then absolute value of 6 is equal to 6, ठीक है? सॉरी, माइनस 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही रहेगी. और इस सूरत में भी वो नया फंक्शन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है? वो देखिएगा कि उसने पिछली दफ़ा एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, इंट वर्जन का ABS फंक्शन क्रिएटेड है, इट विल यूज़ दैट फंक्शन ओनली, ठीक है? वो उसी फंक्शन को ही यूज़ करेगा. ओके, Now this is a generic version of an absolute function. Generic version है और इसका specific version कब बनेगा? Specific version उस टाइम पे बनेगा when you call that function. So when you call that function, जब इसकी कॉल अपीयर होगी मेन फंक्शन में या किसी भी और फंक्शन में, इट विल चेक द टाइप ऑफ द पैरामीटर एंड बाय वाचिंग और बाय डिटर्मिनिंग द टाइप ऑफ द पैरामीटर एट द कॉल टाइम इट विल इंस्टेंशिएट during the execution of the program a version of that function from the template function, और उस नए वर्जन में the type is the same as the type of the parameter when you call that function. ठीक है? सो अगर ABS से आप कॉल कर रहे हैं इसको, ABS फंक्शन कॉल कर रहे हैं with long, so long version of ABS is created. Simplifying source file. So what about the amount of the RAM used? Is it the same whether the template approach is used or actually we write 3 separate functions? So हमने absolute function लिखना है double के लिए, long के लिए, integer के लिए, ठीक है? So एक approach है जिसमें हमारे पास generic programming नहीं है, we have 3 version of that function. The other approach is that we have a generic programming, we write just the template function and then during the execution of the program उसकी अलग से separate copies create होती रहेंगी. So what do you think amount of the RAM? So RAM उसमें कितना use होगा? So that is the same, ठीक है? उसमें जिस अप्रोच हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, सो जिस फंक्शन में हम सेपरेट 3 फंक्शन लिख रहे हैं उस केस में भी सेम मेमोरी यूज़ होगी. इफ़ वी जस्ट यूज़ द टेम्पलेट फंक्शन एंड कॉल दैट फंक्शन बाय दीज 3 डिफरेंट टाइप्स. सो जब उसको कॉल करेंगे डिफरेंट टाइप के साथ, अब टेम्पलेट अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास एक टेम्पलेट है ABS का, हमने 3 डिफरेंट टाइप के साथ उसको कॉल किया. सो रन टाइम पर वो फंक्शन इंस्टेंशिएट होंगे, उनको मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है? और वो एलोकेट रहेगी में, और वो फंक्शन की इंस्टेंशिएट कॉपी
अलाइव रहेगी जब तक प्रोग्राम एग्जिट नहीं हो जाता। सो इन के साथ अगर आपने एक दफ़ा कॉल किया है और दोबारा कहीं पे प्रोग्राम में जाके आप इन के साथ दोबारा ABS का फंक्शन कॉल करेंगे, सो इट विल यूज़ द प्रीवियस कॉपी of that function that is instantiated for the integer type variable. So template approach का benefit कहाँ पे है? It approach simply save from having 3 separate function into a source file. So इसने 3 functions हमारे बचा लिए, just एक template function हमने लिख दिया उसकी जगह। So अगर ये function यहाँ पर तो just ये एक line का function है, right? So if that function is of 100 lines and you have to write that function for 3 or 4 specific types, then you have to write that function 4 times, means 400 lines. So rather, if you are using template, you just use 100 line of code using template, ठीक है, और उसकी type है run time पे generate होती रहेगी. So the template approach simply saves from having 3 separate function into a source file. This means that it makes the source file shorter. तो उसमें अब 3 function नहीं होंगे, एक function template होगा and easier to understand. Plus, for any change in the function, the change should be made only in one place in the source file instead of 3 places. So अगर हमारे पास 3 different functions हैं और उसमें हम तीनों function में कुछ change करना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि function के algorithm में कुछ change आ रही है, for example हम efficiency improve कर रहे हैं, whatever. So for एक approach जिसमें 3 हमारे पास separate functions थे for 3 different types, we have to make changes at 3 different places in the source file. But in the other approach where we have a template function, we just have one template function, so we make changes at one place in that source file. So एक ही जगह पे आपने source file में change किया है. Okay, now let's see the example program 2. So the problem statement is write a program that can sort integer, int, float, double, character and etc. type of array in ascending order and then display it. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक सॉर्ट का फंक्शन लिखना है जो कि किसी भी टाइप के लिए, चाहे टाइप इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैरेक्टर हो। सो कैरेक्टर के केस में वो आस्की वैल्यूज को कंपेयर करके कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर सकता है। सो उस तमाम टाइप्स के लिए काम करें, वी हैव टू जस्ट राइट अ सिंपल टेम्पलेट फंक्शन. सो इफ यू डोंट नो द टेम्पलेट फंक्शन देन वी कैन राइट फॉर इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बट व्हाट अबाउट द एक्सेट्रा? सो दीज टाइप आर unknown to you at this time. So the best approach for that is to use the template function, a sorting function, हम sorting function का एक template version लिखेंगे, and we also write a template version of the display function. ठीक है? So let's go and write the program, sorting program. Let's say हम bubble sort लिख लेते हैं. Start with include. Stream, then using namespace std, okay. Template key is a keyword, right? Then we have the angle brackets, class t. So sorting function की return type क्या होगी? Void, because it just sort the array, right? So then we have a separate function to display the content of that array. So the return type is void. The name of the function is display, right? And the type of the first parameter is a pointer of type t, और t type कब determine होगी? During the execution of the program. It could be integer, float, double, character. And the second parameter is the size. Okay, so let me first comment out this thing.
सो आप टेम्पलेट फंक्शन लिखते किस तरह से हैं? लेट्स से हम सबसे पहले एक मेन फंक्शन, मेन में हम एक सॉर्टिंग का फंक्शन लिखते हैं जो कि सिंपल इंटीजर अरे को सॉर्ट कर रहा है. देन वी कन्वर्ट दैट फंक्शन इनटू अ टेम्पलेट फंक्शन. सो दैट टेल्स यू हाउ वी कैन राइट अ टेम्पलेट फंक्शन. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द जस्ट स्टार्ट बिगिनिंग विद द टेम्पलेट फंक्शन, हम किसी भी एक टाइप के लिए सॉर्टिंग कैलकुलेटर देखते हैं कि वो सही काम कर रहा है. इफ इट वर्क्स फाइन, देन वी कन्वर्ट दैट टेम्पलेट function into that function into a template version of that function. ठीक है, उस function का एक template version बना देंगे और वो लिख देंगे. So start with main. Let's say we have integer array containing 5 elements, 5, 4, 6, 1 and 0 and 1, 5 elements, so size of array is 5. In a for loop, integer I is equal to 0, I is less than size, that is 5, I plus plus. Then we have inner for loop. आई होप कि आपने बबल सॉर्ट का प्रोग्राम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है दैट कोर्स में कर लिया होगा. द कोर्स टाइटल मोस्ट प्रोबेबली इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. उसमें आपने सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स कर लिए होंगे. लेट्स डिक्लेयर अनदर वेरिएबल j, बल्कि हम यहाँ पर एक अलग वेरिएबल कर लेते हैं I, j, temp. So these are the 3 variables that we required. Temp हमें क्यों चाहिए होगा? For the swapping purpose. ठीक है, j is equal to 0, j is less than 5 minus 1, बिकॉज लास्ट एलिमेंट वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर आ जाएगा. उस टाइम पे फिर इनर लूप को आइटरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी. सो इफ a of j plus 1 is less than a of j, if that is the case, then we have to do swapping. Temp is equal to a of j plus 1, a of j plus 1 is equal to a of j, and a of j is equal to temp. Right, so ये swapping हो गया यहाँ पे, and that's it. Right, now let's make a for loop to display the content of that array. ठीक है, इसकी content display करने के लिए एक और for loop लिख लेते हैं, बना लेते हैं. Don't need it because there's just one C out. So उसके elements को एक sorting order में print कर देगा. ठीक है, C out and then array of I को print कर देना है. Space C out and line. ठीक है, and then at the end we have system pause. Now let's execute this program and check whether it works fine or not. So compile it. No error. Now execute it. Let me change the font size so that it is visible to all of you. Okay, so initially the array we have is 5, 4, 6, 0, 1. Now it sort that array 0, 1, 4, 5, 6. So its sorting is perfect, working perfectly fine. So you can change this sign. आप इसको greater than sign कर देंगे. Now वो उसको ascending के बजाय descending order में sort कर देगा. Right? You compile and execute it. Now it sort the array in descending order. That means आपके पास highest value पहले आ रही है and then lowest. ठीक है.
सबसे छोटी वैल्यू से छोटी वैल्यू एंड देन सबसे एंड पे सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, राइट. नाउ लेट्स मेक अ टेम्पलेट वर्जन ऑफ दिस फंक्शन. लेट मी कॉपी. Okay, let me cut this code from the main and paste it over here in the template function. Okay, so it also requires the parameters, sorry, the variable declaration that is here. Okay, now we have a pointer. So अब जब यहाँ पर से आप फंक्शन कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल जो कॉलिंग a function sort, sorry, the name of the function should be sort a function कॉल करेंगे इस तरह से. then you pass a comma 5, size is 5 and a is the base address of this array a. ठीक है, so इसका मतलब ये पॉइंटर यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए. it should point to that publication. now यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. we have to write ptr ब्रैकेट के अंदर आप j लिख रहे हैं, दैट इज सेम एज इफ यू राइट स्टैटिक ptr प्लस j. ठीक है, सो ये दीज बोथ थिंग्स आर सेम. आप चाहे इस तरह से लिख लें इसको या आप इस तरह से लिख लें. दिस एंड दिस दे बोथ आर द सेम थिंग. ठीक है, यहाँ पर भी चेंज करनी पड़ेगी. ptr instead of a, ptr. okay, now this is a sorting function. Let me compile it. Okay, so I is undeclared, so let's declare integer I. so I को हमने declare कर लिया because we are displaying that array in the main function, right. so sort का हमने function बना लिया, इसको हमने array a pass कर दिया, right. compile it, no error, execute it. so it display the array in descending order. ascending के लिए you have to make that sign reverse opposite. तो इसका मतलब है कि हमारे जो template है वो it is working perfectly fine. so that is the function template. ठीक है, इसको function template कहा जाता है. so इसके sign को हमने change कर लिया. now let me compile the code and execute it. now it display the array elements. okay, now we can make a template version of a display function as well. हम display function का भी template version बना सकते हैं. instead of हम यहाँ पर display कर रहे हैं, we can display it over here as well, right. so for that we have to use the keyword template. so हर जो भी function आप template बनाना चाहते हैं, जिस function का आप template version बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको template का keyword use करना लाजमी है. ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफ़ा template का keyword use कर लिया है, अब यहाँ पे void sort लिखूँ या void display लिखूँ तो कोई भी function लिख सकता हूँ. no, so void sort के साथ ये template होगा. एंड इसी तरह से यहाँ पर भी हम template लिखेंगे class t. this could be t और any name. ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है. a type. ठीक है, so return type of display is void, the function name is display. a type का इसको pointer पास करेंगे एंड इसको integer का size पास, integer टाइप में साइज होगा. वाई, बिकॉज अरे के जो साइज है वो इंटीजर में होता है. either it is 5 or 6 but it can never be 5.5. so array का साइज 5.5 कभी भी नहीं सुना होगा आपने. ठीक है, तो 6 होगा या 5 होगा. so that is integer value, that is for sure for any kind of array, whether it is a character array or floating point array or a double array or long array, any kind or any type. so उसमें साइज जो है, even if it is an array of pointer, even then the size is in integer. ठीक है, size is the integer value. so let's cut it and paste it over here. so I को भी आप यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ पर ही पेस्ट कर सकते हैं index value. ठीक है, now this is another function template जो कि display function का template version है. now we call the display function here display a comma 5, right. so पहले sort किया, उससे उसको display कर रहे हैं. let's say 1 and 0. compile it first. oops,
ओके, सो इट सेज a इज नथिंग. सो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमारे पास a जो है वो डिक्लेयर नहीं है. वी हैव पॉइंटर, सो वी कैन राइट ptr. Okay, this semicolon is missing over here, expected semicolon. Now compile it. There's no error. Execute it. So the output is the same. ठीक है, अब हमारे पास डिस्प्ले का सेपरेट फंक्शन आ गया है और सॉर्टिंग का सेपरेट टेम्पलेट फंक्शन आ गया है, राइट. सो दैट इज द करेक्ट डिस्प्ले 0 1 4 5 6. ठीक है. ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर एक और अरे डिक्लेयर करता हूँ, फ्लोट टाइप अरे, लेट्स से डबल टाइप अरे d, and initialize it with some values. Let's say 6.75 comma 5.67 comma 9.33 comma 1.5 comma 0.85. so 1 2 3 4 5 वैल्यूज इनिशलाइज कर लिए. सो अगर ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, 6 वैल्यूज हो जाती हैं, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी कि 6 ही भेजना पड़ेगा फिर. ठीक है. Now I call the sort function for d comma 5 values and then display that function, display d array whose starting address is d and it contains 5 different values. Let me write over here in cout int array cout double array okay. Now let's compile this program. So हमने एक टेम्पलेट फंक्शन लिख दिया सॉर्ट का, एक ही डिस्प्ले लिख दिया, बट वी हेयर यहाँ पर हम पास कर रहे हैं इसको इंटीजर टाइप का एड्रेस और जहाँ पर फ्लोट टाइप का. That means that address point to the memory location जहाँ पर हमारे पास float type की value store है. Now when we invoke that function, when we run the program, a semicolon is missing over here. Semicolon is missing over here again. Sorry for this. So converting int so compile it again. Here it's that's a warning message. Okay, let's run that program, and when we run that program the output is the same. So int array को भी इसने sort कर दिया और double array को भी इसने sort कर दिया. So let me change the type to float. Now this is integer value. Converting int we're passing d is the floating point array. That is strange if it is giving this warning float. So just ignore it. Okay, now let me make a character array, character C, and let's say the character we are assigning are, let's say the character is Z, X, B, C, A.
ठीक है, 5 कैरेक्टर्स हमने असाइन कर दिए। सो ए की आज की वैल्यू इन तमाम से छोटी है, सो ए को शुरू में आना चाहिए, देन बी, सी, देन एक्स एंड देन सी, राइट। सो लेट्स character and passing it C, passing the value C. Okay, this should be size here, this should be size, उसको 10 साइज भी पास हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, whatever, so make it generic. It is giving a warning over here. So let me comment out. It converts int and this is the character array, इसको भी इसने sort कर दिया है. So let me write these statements above the integer. Okay, compile it and execute it. So ये डबल अरे है, इसको भी उसने ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सॉर्टिंग में सॉर्ट कर दिया, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, इंटीजर अरे को भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और कैरेक्टर अरे को भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया. सो वट एवर इज द टाइप इट सॉर्ट दैट अरे. सो जो भी टाइप होगी उसी का ये सॉर्ट का फंक्शन इंस्टेंशिएट हो जाएगा विद दैट टाइप. इंट है तो इंट के साथ हो जाएगा, डबल है तो डबल के साथ, फ्लोट है तो फ्लोट के साथ. एंड ओके, I think the problem is that the type of the temp should be t. So t temp की टाइप भी t होनी चाहिए यहाँ पर, बिकॉज हमने जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवानी है, अगर ये फ्लोटिंग टाइप का पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ पे अगर फ्लोट टाइप आ जाती है तो पॉइंटर इज अ फ्लोटिंग टाइप, दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. एंड इफ वी वांट टू स्टोर दैट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इनटू अ टेम्प तो इसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, राइट. So that is the case where we are getting the warning message previously. So हमारे पास जो warning message आ रहा था वो शायद इसी वजह से आ रहा था कि if I compile that program it give me a warning message over here that converting from integer to float. So I think that could be the problem. So if I run this program, so the values are, so ये जो values है इसमें information loss हो गई है, ठीक है. So 1.5 और ये जो values आ रही हैं 8.5 ये appear नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है. So the right, so the problem is that the type of this temp should be t. So t temp is of t type, ठीक है. Now if we compile this program there is no warning, right. And if you execute it, now the shortest is the 0.85, then 1.5, then 5.75, 6.75 and 9.33, right. So उसने अब correctly arrange कर दिया. पहले भी correctly कर रहा था लेकिन पहले वो information loss हो रही थी because उसमें हमने temp को integer रखा हुआ था. So floating point वाले के लिए भी temp को integer रखा हुआ था, right. So that is the problem. अब character जब होगा तो temp is the character type variable and if t is float the temp is a floating type variable, right. Okay, that is the end of our today's lecture. See you in the next lecture. In today's lecture we have seen a completely new dimension in the programming that is called the generic programming, and in C++ we achieve the generic programming using templates. So in the next lecture we will continue from here, from this point. Thank you very much. Allah Hafiz.